In this video, I'm gonna show you a realistic picture of a medical college. Basically, practicals, lectures, study sessions, workout sessions, yapping sessions. So get along with me from Monday to Saturday as a medical student. So hello everyone, this is me Bhumika and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna show you a couple of days as medical student in government medical college. I'll just try to stay productive throughout the week, like eat healthy, do gym, do studies. So these are my expectations and देखते हैं कि ये expectations reality में बदल पाएगी या नहीं. So yes, so without any further delay, let's go. So it's Monday evening. I went to home this weekend. That's why my room is really messy. So I'll start with organizing my room and my desk. रूम साफ करने के बाद आई डिड सम स्किन केयर एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि मुझे हॉस्टल का पानी सूट नहीं कर रहा है और मुझे उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं. दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस फेस वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम इन होप कि मेरे सारे के सारे पिंपल्स ठीक हो जाए. राइट नाउ अब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि कल मेरी टेबल टीचर एनाटॉमी वाली ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल पूछने वाली है. सो चलो पढ़ते हैं. आई बेटर स्टडी. Not gonna lie, but it wasn't a very productive study session. I wasn't able to complete a lot of topics क्योंकि एक ही टॉपिक में इतना टाइम लग रहा था and already it was 12 o'clock and अगले दिन कॉलेज भी था और जल्दी भी उठना था, तो जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया and then I slept. So it's next morning and I'm making my own breakfast. I'm making chane and this is the first time making it. Let's hope अच्छे बने. भाई जेन्युइनली बहुत अच्छे बने हैं. तुम भी ट्राई करना अगर तुम हॉस्टल में रहते हो. बहुत ही सिंपल है. केटल में आप अपने जो भी चने हैं वो आप उबाल लेना एंड देन ऐड व्हाटएवर यू वांट एंड इट विल टेस्ट रियली नाइस. आफ्टर दैट आई टुक शावर एंड गॉट रेडी फॉर कॉलेज. In today's practical, I did my own RBC count and it was about 4.9 million per cubic millimeter and normal value or physiological value is 5 to 5.5 million per cubic millimeter. In the evening, we went to gym and it is your reminder to move your body too and stay healthy. It was a holiday and there was nothing much to do. I stayed in my room for an entire day and slept most of the time. On Thursday, I attended DH and 2 lectures till 1 o'clock and then there was biochem practical from 2 to 4. इवनिंग में बहुत अच्छा मौसम हो रखा था. दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ वॉक एज वेल एज आई बाय सम स्टेशनरी एंड ग्रोसरीज. On Friday, I didn't vlog much as there was nothing new. At this point, college seems to be really boring and I was so exhausted. Today Saturday, I attended 9 to 11 वाली class, but I'm skipping 11 to 1 वाली lectures because मेरा burnout हो चुका है पूरे हफ्ते class attend करके. मुझे बस एक अच्छा सा nap चाहिए. Also, I wanted to give you a reality check. You may think by watching these vlogs that these guys' lives are perfect, but that is not the whole truth. I am also struggling a lot. सबसे पहले तो मैं घर से पहली बार बाहर आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे adjust करना, मुझे हमेशा घर की याद आती रहती है. I'm always crying behind the scenes, and also now पढ़ाई का pressure भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि
फाइल्स बनाओ, ये टेस्ट वो टेस्ट, you know, it's complete new environment for me. I always have this dream of vlogging my stuff after clearing the मुझे 3-seater room मिला. It's very difficult to vlog in this room, but yeah, I'm trying my best. If you watch till here, then comment down, never give up, and also subscribe to this channel if you do not want to miss realistic college vlogs of these kind.